अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल पे खुशामदीद। ये मेरे पास B5318-42 DSL राउटर है, मॉडेम है। ये इंटरनेट लाइन पे काम नहीं कर रहा। जैसे ही इसको टेलीफोन लाइन कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन ड्रॉप हो जाती है और ये किसी किस्म की ब्राउजिंग नहीं करता। चले इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। लेट्स मूव टू माइक्रोस्कोप। यहाँ पर ये 61089B IC लगी हुई है। मल्टीमीटर को डायोड पे सेट कर लें। अभी ब्लैक लीड को जब इसकी पिन 6 और 7 पे लगाते हैं, रेड लीड को पिन 8 पे लगाएंगे। इसको एक साइड के डायोड ड्रॉप वोल्टेज देने चाहिए और दूसरी साइड पे पिन 5 और 6 7 के दरमियान देखें तो ये भी लो रेजिस्टेंस दे रहा है। इसको एक साइड पे ओपन और एक साइड पे 1 डायोड ड्रॉप वोल्टेज देने चाहिए। तो ये आईसी ख़राब है। मल्टीमीटर को रजिस्टर्स पे सेट कर लें। ये दोनों रजिस्टर 15-15 ओम की है। इनको चेक कर लीजिए, ये रजिस्टर ठीक है। 61089। Now let's check it.
diode, black lead at center pin, red lead at this pin, one diode drop voltage. Yes, now good. Red lead at center, this pin open, red at center pin open. Now it's good. Now it will work fine. अभी ये ठीक रीडिंग दे रहा है और ये भी ठीक काम करेगा। यहाँ पर ये जो फ़ोन लाइन शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये अमूमन जब भी कहीं ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो ये आईसी डैमेज हो जाती है, तो इस आईसी को रिप्लेस करने से ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।